Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ CBCS ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ GE ଆଉ MSc ଫିଜିକ୍ସ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାसेसର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଜକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन ପାଇଁ बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर दबो। तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा ପାଇଁ गो टू सेटिंग्स, क्वालिटी, एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन। सबू वीडियोज ପାଇଁ पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तापर मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे आमे पार्टीशन फंक्शन एंड द थर्मोडायनामिक फंक्शंस ए विषय रे पढ़िबा। सो फर्स्ट देखिबा पार्टीशन फंक्शन। देखो पार्टीशन फंक्शन रो कांसेप्ट पई आमे गोटे फर्स्ट असेंबली कंसीडर करिबा having ideal gas molecules obeying the classical statistics, and let the distribution of gas molecules be such that Ni molecules occupy the ith state having energy between Ei and E plus Di. Now the degeneracy means the number of energy levels, it is Gi. Then as per the Maxwell distribution law ame lekhi pariba Ni to be equal to Gi e to the power minus alpha then C to the power minus Ei by kT, right? ताले एठी e to the power minus alpha को आमे सपोज नहीं गला कैपिटल A, ताले एबे शॉर्ट फॉर्म रे याकू लिखि परिबा Ni equal to Gi A e to the power minus Ei by kT. Now the total number of gas molecules in the assemble in n will be n equal to, that is the total number, equal to summation over I of Ni. सो ये आम एन आई रैल्यू पुट करदेला ए हूँ कन्स्टांट एटा बाहर को पलि आसला। ओके, नाउ एटी समेशन साइन मन रख जेहेतु ए है कन्स्टांट इट हैज बीन टेकन आउट ऑफ द समेशन एंड हियर अल्फा इज टेकन टू बी कन्स्टांट आ ए रैल्यू हूँ ई टू द पावर माइनस अल्फा। ओके, ताले लैग्रेंजियन को आम अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर हिसाब रे नबा। सो इक्वेशन 2 एबे जो अछि एथिरो आमे पाई परिबा n by a रो वैल्यू which is equal to summation over I Gi e to the power minus Ei by kT, which is nothing but your partition function, that is z. Okay, याको आमे कहिबा the Boltzmann partition function or simply the partition function. And here in equation 3 the expression for z represents the sum of all Gi into e to the power minus Ei by kT terms for every energy state of the given molecule, and therefore the quantity Z indicates how the gas molecules of an assembly are actually distributed or they are partitioned. Okay, partition function माने एठी gas molecule गुडार partition को ये बुझेबो among various energy levels, right? Now if the energy of the ith level याको कहबा जदि आमे Ei, then keeping in mind that the weight of an individual level is unity, equation 3 को हमें लिखि परिबा z equal to simply summation over I e to the power minus Ei by kT. Okay, now এই equation रे जो हमें देखु छु term z is the sum over all the levels of the system in the assembly. Okay, and that is why it is customary to call z as the partition function for a system in the assembly. Now the energy, which is actually the expression for the partition function, does not mean only the translational component, केवल translational component energy बोली नुहे, as is the case for the structureless molecules, but in general it may contain the components corresponding to other degrees of freedom. जोटा हमें जानिछु other degree of freedom apart from translation is like your rotation, vibration और electronic भी हेई पारे. Okay, so এই सब component भी रही पारे. Okay, now the partition function can be used for calculating various thermodynamical properties of the assemblies and which are having the independent systems obeying the classical statistical laws.
and it does not matter whether the ensembles have distinguishable or indistinguishable independent system. ओके आम डिस्टिंग्विश करिपारू बा न करिपारू ता उपरे किछि भी एटा डिपेंड करू नाही एंड क्लासिकली a gas molecule is assumed to be a structureless identity and the total energy of the gas molecule is practically equal to the sum of kinetic energy of the individual molecules. And in classical treatments এই जो distribution রହୁଛି energy states ର can be considered to be a continuous one. ओके क्वांटम रे आमे discrete बोली नबा. ओके ऑलरेडी आमे या पूर्व क्लास रे डिफरेंट ensembles रे partition function रो वैल्यू देखि सारिछु. Okay, so the number of energy levels in the momentum range that is between p and p plus dp याको आमे लिखि परिबा gp dp equal to v into 4 pi p square dp by h cube. ओके एटा मन पकाओ तुमे जेतबेले मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढुतलो. ओके v होउची एठी तमरो पोजीशन स्पेस रो वॉल्यूम एटा मोमेंटम स्पेस रो वॉल्यूम स्फीयर रो आ ओके एठी फेज स्पेस रो वॉल्यूम. ओके अच्छा तापरे एबे जदि आमे नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स देखिबा बिटवीन द एनर्जी E एंड E प्लस dp ताले आमे एबे रिप्लेस करि परिबा p स्क्वायर को 2me रे मन रखो एठी काइनेटिक एनर्जी रहउची पोटेंशियल न होय. ओके सो दैट dp रो वैल्यू तमे दिस मच पाई गलो ताको एबे रिप्लेस कर देबो सो दैट GED रो वैल्यू याको आमे फाइनली ए हिसाब रे पाउछु व्हिच इज इक्वेशन 5. नाउ here the distribution of energy states is continuous as we said. So equation 3 को आमे एबे जदि लेखिबा जोटा पार्टीशन फंक्शन रो वैल्यू थिला. ओके एबे याको आमे रिप्लेस कर देला समेशन को विथ द इंटीग्रेशन. ओके एंड gi को एबे लिखि दबा आमे gede. ओके अच्छा तापरे ged रो जो वैल्यूटा एठी पाइला इक्वेशन 5 रे ताको आमे पुट करिबा सो दैट जो क्वांटिटी गुडा कांस्टेंट अछि बाहर को आसीगला इंटीग्रेशन भितरे एतिकी रहिला. ओके याको तमे इजीली डेराइव करि परिबो बाय यूजिंग द गामा फंक्शन सो दैट द डेफिनाइट इंटीग्रल कैन बी शोन to have a value this much. Okay so partition function ro value jodi finally calculate karibo the translational partition function for the gas molecule will be equal to v by h cube 2 pi mkt to the power 3 by 2. Okay now era hela partition function विषय रे एबे देखिबा partition function and the thermodynamic quantities or the thermodynamic function. Okay केमती यारो relation बाहरुची. So for this purpose we shall first establish the relation between the partition function and the thermodynamic quantities so that first जदि देखिबा हमें entropy जे कोनोसी assembly रो आउ weight of the most probable configuration they are related by the equation s equal to k log ohm max. Okay एठी जदि हमें देखिबा weight of the configuration for a classical system is given by जो ohm is equal to n factorial then we have the series multiplication over I gi to the power ni by ni factorial. Okay so एबे जदि हमें both side रे log नउछु ताले accordingly RHS ए हिसाब रे expand करि गला. Okay now we can apply the Stirling approximation as per which log ni factorial eta tome janicho is equal to n log n minus n so that we can simplify this equation. Okay now we apply the Maxwell-Boltzmann distribution law for the most probable configuration which is ni equal to this much. Okay ताले याको एबे आमे जदि पुट करिबा आ फर्दर आमे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जेतु कांस्टेंट अछि कैपिटल n इक्वल टू समेशन i n i नै जबा एति की करला परे log o max याको आमे बाहर करिबा को ट्राई करिबा. ओके आ ठीक कैपिटल n एज आई सेड याको समेशन n i पुट करिबा. ओके so at the end you will get log o max equal to n log n plus alpha n plus beta summation n I e I. And here if the total energy of the gas molecules of the assembly is taken to be E then E equal to can be written as summation over I n I e I. Okay a equation so equation 5 जोटा एठी अछि ताको हम एबे रिप्लेस करि परिबा ए टर्म रे so it becomes beta E. Okay तापरे एबे हमें सब्स्टिट्यूट करिबा a equal to e to the power minus alpha so that alpha equal to we can write log a ताको एबे पुट करिबा so that n log
n by a, and this n by a is nothing but the partition function, so n log z plus beta e. Okay, and here beta, as you know, is equal to 1 by kt. Okay, so ethi amaro final value log o max ro bahila n log z plus e by kt. Therefore ebe entropy jodi dekhiba amaro jo assembly by ensemble ro, it is equal to, which is k log o max or nk log z plus e by kt. ओके आ जदि आम आइडियल गैस नौ ताले ई रो वैल्यू आम जानी इक्वल टू 3/2 एनकेटी ताको आम पुट करदे ये सो दैट देख तले टी थिला सो टी कटिगला ये जगह ओके सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर द entropy and it gives you the expression for the entropy of the assembly of ideal gas molecules. Similarly, other thermodynamical functions can be evaluated easily as follows. Okay, तुम जानिछ thermodynamical function जते सब अछि फर्स्ट जदि देखिबा हमें हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, it is given as E minus Ts. Okay, you can also write U minus Ts. Okay, so एबे आमे जो s रो वैल्यू पाइथिला ताको आमे पुट कर दबा. ओके आफ्टर पुटिंग देखिबो एठी मल्टीप्लाई जदि कर दबु छो तमे t को एठी देखो तळे t अछि ताले एटा माइनस e हि जिवो एंड माइनस e प्लस e कटि गला यू विल गेट माइनस nkt log z, which is the required expression for the Helmholtz free energy F in terms of the partition function. Then we have the total energy एबे जदि आमे बाहर करिबा E. ओके तमे एठी याकु इंटरनल एनर्जी रे भी पढिछो. सो जदि E बार हे गला एवरेज बा मीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ an assembly of n such independent symbols, then E बार को आमे लिखि परिबा E by n. ओके E रो वैल्यू आ n रो वैल्यू आमे पुट कर देबा. तापरे हमें लगेबा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ओके सो वी गो फॉर कैलकुलेटिंग फर्दर एंड सिंप्लिफिकेशन. एट द एंड देखो डिनोमिनेटर हेगला तुमर आसी जीवो पार्टीशन फंक्शन. ओके कहीं बिकज पार्टीशन फंक्शन को हमें पाइछु ए हिसाब रे समेशन ओवर आई जी आई ई टू द पावर माइनस ई आई बाय केटी. ओके तापर कौन करवा आम यार पार्शियल डेरिवेटिव नेबा विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कहीं बिकज आमको ये जो न्यूमरेटर ये टर्म रो रिप्लेसमेंट आनिबार अच्छी. ओके सो देखो पार्शियल डेरिवेटिव को फर्दर कैलकुलेट कले आम पाउछु 1 by k t स्क्वायर समेशन ओवर आई जी आई ई टू द पावर माइनस ई आई बाय के टी. सो फॉर द आइसोथर्मल आइसोकोरिक ट्रांसफॉर्मेशन बिकज कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं आम न्यूमरेटर रे थिबा ए जो टर्म समेशन जी आई ई टू द पावर माइनस ई आई बाय के टी यार वैल्यू पाइगला के टी स्क्वायर डेल जेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ताकू एबे रिप्लेस करिबा फॉर द आइसोथर्मल आइसोकोरिक ट्रांसफॉर्मेशन वी आर गेटिंग द एवरेज एनर्जी टू बी दिस मच. ओके ए जो जेड बाहर अछि याको हमें भितरे यदि इंट्रोड्यूस करछु देन दिस इज नथिंग बट यार पार्शियल डेरिवेटिव आमे जदि log z रो काढिबा ताले एति की पाइबा आमे. ओके 1 by z del z by del t. ओके सो एबे एवरेज एनर्जी पाई सारला परे वी कैन कैलकुलेट द टोटल एनर्जी व्हिच इज नथिंग बट n e bar. सो यार फाइनल वैल्यू आमे पाइगला व्हिच इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ एन ensemble in terms of partition function. Then the next thermodynamical function is the enthalpy H, which is given by E plus PV. ओके सो जदि आमे 1 मोल नौछु आइडियल गैस ताले PV इक्वल टू RT ताले आमे एठी लेखि परिबा E प्लस RT H रो वैल्यू. ओके एबे आमे कोन करिबा E रो वैल्यू को रिप्लेस कर देबा. ओके सो we are getting the expression for enthalpy in terms of partition function very easily. And lastly the Gibbs potential, which is given by H minus Ts. Okay H minus Ts होची Gibbs potential रो वैल्यू. तेबे आमे कोन करिबा एठी इक्वेशन जोटा पाइथिला एंथैल्पी H पई ताकू आमे यूज करिबा. तापरे Ts अछि S रो वैल्यू भी पाइछु आमे ताकू यूज करिबा. एंड वी गो ऑन फॉर फर्दर कैलकुलेशन. देखो याकू आ टिके एक्सपांड करिछि सिंपलीफाई करिछि. सो देखो एठी गोटे जिंस मार्क करो n k t square, then we have the square bracket, this is nothing but the energy E. Okay similarly 3/2 nkt is also the energy E. so एठी माइनस अछि सो प्लस E और माइनस E एटा कटि जिवो दुइटा जाको. we are left with RT minus nkt log z, which is the value of the Gibbs potential. Okay further जदि हमें प्रेशर देखिबा गैस रो then it is given by
माइनस डेल एफ बाय डेल भी सो इटी आम एफ रो जो वैल्यू पाइथिला ताकू यूज करि परिबा so that we are getting the value of pressure to be equal to nkt del log z by del v. Okay, similarly the specific heat at constant volume cv याकू भी बाहर करि परिबा for the isothermal isochoric transformation आम already internal energy बा total energy पाई सारिछु so cv equal to del e by del t at constant volume so एठी e रो वैल्यू आम सिंपली पुट कर देला आकू पार्शियल डेरिवेटिव बाहर करिबा with respect to temperature we are getting this value of the specific heat at constant volume. Okay, तापरे at the end गोटे problem एठी अछि. Okay, so that the if partition function is given by z then the mean energy E bar is given by minus del log z by del beta. Okay, so very easily you can do it okay by yourself. Further এই problem পরে देखो एटार सॉल्यूशन एटा देला फाइनली देखो बाहर कला याको प्रूव करिछि. ओके ए बडा प्रॉब्लम मे बी पड़ी पारे एग्जामिनेशन रे. फर्दर दिस आई हैव टेकन फ्रॉम अनदर बुक. ओके सेम जिंस ए बही रे भी देछि यू कैन रीड फ्रॉम दिस बुक आल्सो and make your note accordingly by combining from both the books. Okay, Thank you.